हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम फैराडे लॉज और फैराडे लॉ पर बेस्ड जितने भी सारे एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं सभी सॉल्व करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो फैराडे लॉ स्टेट दैट द मास ऑफ द सब्सटेंस produced at an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of charge. It means electricity passed. इसका मतलब है मेरे बच्चों, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस जो इलेक्ट्रोड पे मास डिपॉजिट होगा, दिस इज द डिपॉजिटेड मास। दैट डिपॉजिटेड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, m proportional to q. Deposited mass is directly proportional to charge and charge equal to I into t. So that's why m proportional to it and m equal to zit, where z is electrochemical equivalent. This Z is electrochemical equivalent. And this Z value equal to E upon F, where E is equivalent weight and F is Faraday constant. And we know that equivalent weight equal to mass divided by charge. This is N. This is N factor also. ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चों, अगर आपको फाइंड आउट करना होगा व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 2H प्लस सल्फर 32 और ऑक्सीजन 16, 4 जा 64, दैट इज 98. तो दिस इज द मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड and equivalent weight of sulfuric acid equal to 98 and there have the H ions 2, तो divide by 2, that is the 49. तो 49 क्या है? equivalent weight of sulfuric acid. So that's why here equivalent weight equal to atomic mass upon n factor where I is current and T is the time in seconds. So that's why we conclude that Z equal to A upon NF, A atomic mass, n factor and F is the Faraday constant, and the value of Faraday constant equal to 96500 coulomb. So that's why the Faraday first law equal to M equal to ZIT or Z equal to A upon NF. So hence we conclude that the Faraday first law equal to M equal to A upon NF into IT, where M mass deposited on electrode during electrolysis equal to A atomic mass, n factor, F Faraday constant multiplied by I current in ampere in time in seconds. तो हमारे Faraday फर्स्ट लॉ का डायरेक्ट फॉर्मूला हुआ M equal to A upon NF into IT. Where charge of one electron 1.602 10 power minus 19 coulomb and charge of n electron n into e. तो therefore मेरे बच्चों एक फॉर्मूला मिला Q equal to n into e, where n is the number of electrons and e is the charge of electron 1.602 into 10 power minus 19 coulombs. Charge of one electron equal to this one. तो चार्ज ऑफ वन मोल कितना होगा? वन मोल मीन्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, एंड एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर 23. तो दैट्स वैल्यू इज 96487. तो अप्रॉक्स इज वैल्यू इक्वल टू 96500 कूलॉम और दैट इज कॉल्ड 1 फेराडे. 1 फेराडे इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and charge of n mole n into f. So Q equal to n into f. If number of moles are given, here n is number of moles. If number of moles is given, then total charge equal to number of moles multiplied by Faraday constant. If number of electron is given, then formula Q equal to n into e, where n is the number of electrons and e is the charge of electrons. ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा. And second law states that मेरे बेटा, mass deposited of electrode is directly proportional to equivalent weight. ये तब के लिए होगा मेरे बेटा सेकेंड लॉ, जब हमारा जो सेल सीरीज में अगर हम लगा दें उनको, द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is passed through different electrolytes when connected in series, then the ratio of the mass of substances produced is directly proportional to their chemical equivalent. Chemical equivalent means equivalent weight. Mathematically, M proportional to E and M1 upon M2 equal to E1 upon E2, mass of different electrodes deposited, and E1 and E2 their equivalent weight. Okay, so this formula is M1 upon M2 equal to E1 upon E2.
नेक्स्ट पार्ट मेरे बच्चों एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन नंबर 10 है इंटेक्स. इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर. आई दे रखा है, टी गिवन है. तो हम इस क्वेश्चन में एन कैसे फाइंड आउट करेंगे मेरे बच्चों. ये बात हम जानते हैं कि Q इक्वल टू एन इंटू ई. वी नो दैट Q इक्वल टू एन इंटू ई एंड ऑल्सो नो दैट Q इक्वल टू I into T. So in this formula we conclude that this is the equation number 1, equation number 2. So that's why N into E equal to I into T. In this question we find the number of electrons I into T multiplied by E. E is the charge of electron. Okay. And I is given in the question, that is 0.5 and time equal to 2 into 60 into 60 divided by 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb and time in second. Okay मेरे बेटा, in this question 0.5 multiplied by 2 equal to 1. तो this is 3600 divided by 1.602 and this is 10 to the power 19. और मेरे बच्चे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा दिस इज़ 2.247 into 10 to the power 22. इट्स अवर फाइनल आंसर. बहुत सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया. आप इसको एक बार अगेन दे सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं मेरे बच्चों. ये हमारे इंटेक्स नहीं, हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है. हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस. 1 मोल ऑफ Al3. दिस वन. तो इन दिस वन मेरे बच्चों Al3 positive plus 3 electron equal to aluminium. So in this one N equal to 3 and formula Q equal to N into F. Here the value of N equal to 3. So that's why your answer equal to 3 Faraday. If change into the coulomb, that's why 3 multiplied by 96500 coulomb. ये हमारा फाइनल आंसर होगा. आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना. Second one, 1 mole of Cu2 plus 2 Cu. This is Cu2 positive plus 2 electron equal to Cu, N equal to 2. So Q equal to NF, that's equal to 2 Faraday and 2 multiplied by 96500 coulomb. ये हमारा फाइनल आंसर होगा. And third one is MnO4 to Mn plus 2. So see here MnO4 to Mn plus 2. What is the oxidation number of manganese here? This is x minus 8 equal to minus 1. That's why plus 7. Here plus 7 and this is already plus 2. What is the charge? So that's why you put here 5 electron to balance the charge. And this one N equal to 5 here and Q equal to NF. So that's why value of Q equal to 5 Faraday and 5 into 96500 coulomb. Next question. How much electricity in terms of Faraday is required to produce 20 gram calcium to CaCl2? So this one is Ca2 positive plus 2 electron equal to Ca. In this question 2 Faraday, this is n equal to 2. That's why 2 Faraday required mass of calcium equal to 40 gram. 40 gram. So in this question मेरे बच्चों we know that to produce, but this is orally question, produce 40 gram CaCl2 charge required 2 Faraday. तो फिर for 20 gram calcium this is 2 Faraday divided by 40 multiplied by 20. So that's why our answer is 1 Faraday. और चेंज करना चाहते हैं तो 1 Faraday equal to 96500 coulomb. And next one is 40 gram Al from Al2O3. So this is Al3 positive plus 3 electron to aluminium. So here this is 3 Faraday or aluminium mass is 27 gram. Okay. To produce 27 gram aluminium, 27 gram of Al2O3 मेरे बच्चों charge required equal to 3 Faraday.
So therefore, for 40 gram requirement of charge, 3 Faraday divided by 27 multiply by 40. 3 9s are 27, 40 upon 9. So our answer is 40. 9 4s are 36. This is 4.44. The final answer is 4.44 Faraday. If you change in the coulomb, multiply by 96500. Okay, next question is मेरे बच्चों 14. How much electricity is required in coulomb for the oxidation of 1 mole of H2O2 O2? So here 1 mole of H2O2 O2. So this is fixed in this question. This is 1 mole of H2O. इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. According to 1 mole of water, we balance the reaction. This is half O2 plus 2H ion plus 2H plus ions. That's why and the value of N equal to 2 here. And our question is Q equal to NF and number of charge here 2. So that's why this is 2 Faraday and change into coulomb. 2 multiplied by 96500 coulomb. नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3. तो FeO को हमने कन्वर्ट किया, Fe2O3 बैलेंस किया. तो मेरे बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन में ये ध्यान रखना पड़ेगा, 2 Fe2 required 2 Fe3 plus 2 electron because balance the reaction. In this question the oxidation of 2 moles of charge required for 2 Faraday. तो 1 mole के लिए कितना required होगा? Here n equal to 2, there n equal to 2, but mind there n equal to 2 for 2 Fe2 plus ion. तो 1 के लिए कितना requirement होगा? 1 Faraday, और 1 Faraday you know that 96500 coulomb. Next question, question number 15. In this question, NiNO3 whole twice is electrolyzed between the platinum electrodes using a current of 0.5 ampere for 20 minutes. अब देखेंगे, अभी हमने क्वेश्चन का मेरे बच्चों पढ़ाया था फेराडे फर्स्ट लॉ, और फेराडे फर्स्ट लॉ बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम. M इक्वल टू ZIT and Z equal to A upon NF into IT, where A mass deposited and A mass of the मेरे बच्चों, A mass of the substance and number of electrons involvement during reaction. So Z equal to A upon NF into IT, and N we calculate number of electrons involved during a reaction. So in this one Ni, so this is Ni2 positive plus 2 electron equal to Ni. So here the value of N equal to 2, value of N equal to 2. So this is equation number 1. All these values put in equation number 1. So M equal to, what is the atomic mass of the substance? This is nickel, that is 59. This is 59 upon N2 and F, Faraday constant 96500 coulomb, and current, that is 5 ampere. The value of current is 5 ampere multiplied by time, and time equal to, in this question, 20 minutes. Change into the second. This is 20 into 60. In this question, you go for the solve this question. 0 and 0, both zeros are cancelled, and 2 also cancel. And this question, 59 multiplied by 5 into 6 divided by 965, 59 multiplied by 30 divided by 965. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, तो ये निकल के आएगा हमारा 1.83 ग्राम. सबसे आसान तरीके सॉल्व होगा मेरे बच्चों, हम डायरेक्टली फर्स्ट लगाएंगे M इक्वल टू ZIT एंड Z इक्वल टू A अपॉन NF इंटू IT. तो मास डिपॉजिट दिस इज 1.83 ग्राम. ओके, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं मेरे बच्चों हम, क्वेश्चन नंबर 16. 3 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ABC, ZnSO4, AgNO3 एंड CuSO4. तो इन दिस क्वेश्चन द मासेस आर गिवन. तो डेटा हम सबसे पहले फर्स्ट सिल्वर के साथ जाते हैं. तो नंबर फर्स्ट Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Ag. ओके, एंड वी नो द फॉर्मूला इक्वल M इक्वल टू ZIT एंड Z इक्वल टू मेरे बच्चों A अपॉन NF इंटू IT. तो इन दिस क्वेश्चन A mass of the silver, that is 108 and 1 NF 96500 coulomb, and
value of I is given 1.5 ampere, and in this question we calculate the time. And mass deposited of the silver or electrode is this is 1.45 gram, 1.45 gram. So therefore time equal to cross multiplication, and time equal to 1 point, sorry मेरे बच्चों, time equal to 1.45 multiplied by 96500 divided by 108 into 1.5. जब हम इसे सॉल्व करेंगे मेरे बेटा, ड्यूरिंग कैलकुलेशन दिस इज 863.73 seconds and change into the minutes, that is 14 minutes and 40 seconds. ओके ये हमारा फाइनल आंसर होगा. लेकिन सेकंड एंड थर्ड वन के रिगार्डिंग मेरे बच्चों, उसको हम सेकंड लॉ से कर सकते हैं. सबसे आसान होगा, कोई मिस्टेक नहीं होगा. दैट इज Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Zn. ओके मेरे बेटा, दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ M इक्वल टू ZIT. फेराडे फर्स्ट लॉ, Z इक्वल टू A/NF इंटू I इंटू T. और मेरे बच्चों हम टाइम ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं, और दैट टाइम इज़ गिवन 863.73 सेकेंड्स. ये क्वेश्चन आप फर्स्ट लॉ, फेराडे फर्स्ट लॉ की हेल्प से अपने आप करेंगे. सेकंड लॉ की हेल्प से मैं करा रहा हूँ आपके साथ, और आप सॉल्व कर सकते हैं. एंड दिस वन इज़ M1/M2 इक्वल टू E1/E2. ओके, M1 mass deposited silver 1.45, and this one we calculate mass of zinc M2 equal to equivalent weight 108, because the equivalent weight of silver equal to 108 upon charge 1, so that's why it made mass is 108. Okay, and E2 that is zinc, equivalent weight of second one zinc, M1/M2 equal to E1/E2, and zinc mass is given in the question, and zinc mass is 65, and equivalent weight of zinc equal to 65 divided by 2, because charge here 2, so this is 65 and this is multiplied by, and M2 equal to 1.45 into 65 divided by 108 into 2, और सॉल्व करने के बाद मेरे बच्चों आंसर मिलेगा 0.436 ग्राम. ओके, एंड मेरे बच्चों इसी के बिहाफ पे आप क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सॉल्व कर सकते हैं. Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cu, and copper mass is given 63.5 gram. Okay, तो equivalent weight of copper equal to 63.5 divided by 2, और इसको आप सेम अप्लाई कर सकते हैं मेरे बच्चों. M1/M2 इक्वल टू E1/E2. M1 you compare with the copper, sorry first one silver, and silver mass equal to 1.45 gram deposited, 1.45 M2 we calculate the mass of copper, and equivalent weight of silver equal to 108, and equivalent weight of silver and this one equal to 63.5 into 2. So in this one M2 equal to 1.45 into 63.5 divided by 108 into 2. जब सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों तो इसका आंसर आएगा 0.427 ग्राम. यही क्वेश्चन आप फर्स्ट लॉ से भी कर सकते हैं. M इक्वल टू ZIT, आप खुद एक बार चेक करना, Z इक्वल टू A/NF इंटू IT. मेरे बच्चों ये हमारा वीडियो चैनल पे जो अभी हमने आज अपलोड किया है आपके लिए फेराडे लॉ के सारे न्यूमेरिकल्स बहुत फास्ट. कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. धन्यवाद मेरे बच्चों, मन लगा के पढ़ाई करते रहें. ऑल द बेस्ट.